Very good morning, friends, and welcome to my channel. It's another beautiful day. It's Tuesday, and I had a massive coughing fit in the morning because I had amla, and amla is very dry, so it got stuck in the throat. So in the church, I was actually coughing like a dying duck. But I went off. I just visited and I went off. Then just that, maybe too much of phlegm. I have no idea. Yesterday also was my fasting day. I did not eat much. A bit handful of almonds. In the morning I had upma and tea and that's it. And when people say no, we are not bothered about looks, and then we say, see, I went in for this person because I was. See, sometimes it is your mindset. You don't think that way, but everybody likes a pleasant face. और ये मैंने खुद भी देखा है. People might not say anything, but when you are stylish and when you are gorgeous, when you are trendy, chic, good looking, vibrant, vivacious. I'm not saying that you should be like a fashion model. We are so dumb and like a skeleton, like a clothes horse. No, you should not be a pump. Like you're well groomed, you're hygienic. All these things, so many things matter to be attractive. The way you speak, the way you communicate. Why do people only take a single factor saying good looking? What if I was really good looking? I was white, and I was really beautiful, but I had bad manners, bad hygiene, bad everything. I don't know how to communicate. I don't know how to respect myself or respect others. So, would you think I would get any of this result? Check my hair after my spa. I usually like to tie my hair and keep, but this is the result I got after my spa. I lost at least 3 kgs of hair, and I'm going to have another haircut at this end of this month. My hairstylist told me कि आ जाओ haircut. My salon guy, he told me come. I should try to make it burgundy, but I don't know. Burgundy shade तो आया ही नहीं लगता है. I liked it. Generally, I take my comb and start combing my hair, but my mind is in different directions. Though things should not affect me, things are not really affecting me. But when I see the past, today I got talking to somebody from my community who was very active and in cultural activities, and he is a firebrand because he's a writer, speaker, lecturer, and he's an IT person on a very global level. So he's this vice president and head of the project. तो इनका दिमाग कैसा रहता है? वो are very clever in their things. हर चीज़ में marks. So he is successful in his own way. तो उनको he has his own publication for Konkani language and all that. So he was always very hoity-toity and he always had an attitude. I remember उन्होंने 2018 में he had invited me for some award show and I didn't turn up and all that. And every interaction with him was a very kind of a mess. Na? He finds everything substandard. Naturally, उसका level कहाँ है? I said, why are you expecting too many things from these people? Because I wanted to do this movie festival, film festival with this Konkani language in 2017-18. मुझे कोई result नहीं मिला. At least those Govans were little enthusiastic. I had all that network of all those directors and producers in Goa. बट इनकी काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सबस्टैंडर्ड रहते हैं. सम ऑफ देम आर प्रिटी गुड. वो अपना खुद का पैसा भी लगाते हैं. पीपल आर ऑल्सो फंडिंग इन. तो बट इट डिडंट टेक ऑफ. बट आई वॉज वेरी कीन ऑफ हैविंग दिस फिल्म फेस्टिवल एंड आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड. कोई कॉपरेशन नहीं मिलता है. पीपल आर ऑन डिफरेंट टेंजेंट्स. अपनी ही दुनिया में हैं लोग.
सो दिस इज़ वन ऑफ द पायनियर्स, जैसे बोलते हैं ना, इन द लिटरेरी फील्ड एंड ऑल दैट. तो ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग ऑन अ बिग स्केल, कल्चरल एक्टिविटीज़ में. सो आई हैव इंटरेक्टेड विद हिम in couple of things, and he said, you didn't turn up when I had to do my book promotion. I said, it was not me, it is my mother. And he said, you didn't keep your commitment. I said, my mother was showing enthusiasm, and she said, I will do, I will do, and then she didn't turn up. Then he said, you did not turn up. I said, it is not me, it is my mother who said she was coming, and that's how I said my mother will be coming in, not me. एंड मैं तो लैंग्वेज भी नहीं जानती हूँ, ना मुझे रीड करना आता है. नाइदर आई वांट टू, नाइदर आई कैन रीड, नाइदर आई कैन वट एवर. I can speak, but I cannot write and I cannot read. So how do I go and talk about your books? I said then she didn't turn up. Then he said, yeah, I was upset. I said, yeah, because she backed out last minute. I said, that has ruined my reputation. She used to do such things. If you're not interested, don't say, because these people, they keep a grudge. I said, see, listen, it was, that was long time ago. Then I had to explain, since this person is with, he was working and he was a global something VP, and he was based in Gulf for IBM. तो ऐसे लोगों को ना छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती है. जब when I'm telling him clearly it is not me and my mother, then I had to remind him it was not me. On her behalf I had said that she is going to come, not me. मैं आके क्या करूँ? तुम लोग के मैंगलोरियन कम्युनिटी के साथ मुझसे तो आई एम डूइंग सम, उनके लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की है. दे आर बैक स्टैबिंग मी ओनली. उनके मूवीज़ के लिए रिलीज़ करे, प्रमोशन के लिए पैसे छूटते ही नहीं. मैंने बोला बाकी चीज़ों में वेस्ट करने के लिए होता है, अपने कम्युनिटी के. मैंने बोला मेरे कन्वेंस का, इसका उसका, मीटिंग्स के चार्जेस में चार्जेस लगाऊंगी. आई एम नॉट गोइंग टू डू फ्री. व्हेन आई डिड फ्री देयर वाज नो वैल्यू. आई सेड नाउ एवरीबडी हु कम्स थ्रू मी आई एम गोइंग टू चार्ज देम. आई सेड माई cap of fee मैंने, I said 5,000. Then they said, that was way back in 2018. I said, I will do everything till the date of release. I'll be standing there. Ticket sales don't come under me. I'm only there to promote, and I'm there to get your meetings and get your movie released in Bombay in the theater. That's it. उतना ही मेरा काम है. You all do whatever you all want to, but I'm going to charge you all for it. 5,000 बोला, नो इट्स टू मच. मैंने बोला चलो 4,000, बिकॉज इट टेक्स मी बैक टू बैक मीटिंग्स होते हैं मेरे. आई हैव टू निगोशिएट टिकट रेट्स बिकॉज इट डजंट कम ऑन बॉक्स ऑफिस. मैंने बोला किसके अंदर इतने गट्स है, इतना इंटेलिजेंट होना, तो उनके साथ बैठ के निगोशिएट करो. दे विल नॉट इवन एंटरटेन यू. आई सेड आई एम इन टच विद ऑल दोज पीपल ऑन ऑल इंडिया लेवल. जैसे कोई भी थिएटर का ये आई सेड दे आर नॉट सिंगल स्क्रीन, दे आर अ कंपनी, दे आर अ कॉर्पोरेशन. यू हैव टू स्पीक टू देयर GM. यू नीड टू नो द GM. यू नीड टू नो द टॉप शॉट पीपल. तुम इनके मैनेजर के मुँह नहीं लगते हो, थिएटर मैनेजर के. यू गेट द थिंग्स डन बाय ईमेल. आई सेड इतनी हिम्मत है, वो लेवल पे किसी को हो नहीं सकता है. फिर ये छोटे छोटे लेवल के लोग हैं, इनको नहीं अक्कल है. मैंने बोला वो लेवल का काम करने के लिए देन दे नीड शांति. आई सेड आई वांट टू चार्ज फॉर इट. जब भी मैंने फ्री का काम किया है, दे वर एक्टिंग स्मार्ट. दे डोंट इवन नो व्हाट इज़ द हार्ड वर्क विच गोज. देन देर इज़ द मूवी जो सॉफ्टवेयर बनाती है, उसका कंपनी वो अलग रहती है. यू हैव टू गेट इन टच विद देम, क्योंकि ये कौन से इसमें शूट करते हैं, डज इट मैच द थिएटर का सॉफ्टवेयर, ये भी रहता है. ये भी इसका लास्ट मूवी आई हैड टू फेस ऑल दीज थिंग्स. तब मूवी डाउनलोड ही नहीं हो रही थी, और मूवी 8:30 बजे को रिलीज़, 9 बजे को रिलीज़ हो रही है. 8:45 को तक मूवी इज़ नॉट डाउनलोडेड इन द थिएटर का सॉफ्टवेयर. आई हैड टू लिटरली स्टैंड देयर for 2 hours since morning 7 o'clock to 8:45 to see that movie is downloaded in the projection room. ऐसे वाले काम किए हैं मैंने. और ऊपर से भी पीपल आर बैक स्टैबिंग मी. आई सेड शट योर माउथ. कुछ काम आता नहीं है, नहीं समझ में आता है. डू यू नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़? देन आई हैड टू बी इन टच विद द पर्सन, वो जो उनके GM है, जो मूवीज़ का जो सॉफ्टवेयर होता है, उसके GM. he knew me I had a meeting with him, so he knew me personally. तो I said, and he was also a Mangalorean. I said, ये मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी नाक कट जाएगी. सिंह नो शांति, मेरी टीम से तुम्हें सब कॉपरेशन मिलेगा, वरना उस दिन मूवी भी नहीं आएगी थिएटर में. मैंने बोला तुम लोग को चिंदी 200-100 रुपये के बारे में मेरा पूरा रेपुटेशन, मेरा पूरा ये लगा पड़ा है, दाव पे लगा पड़ा है. एंड सो मेनी पीपल आर इन्वॉल्व. आई एम इन टच विद द GM ऑफ द मेन कौन सा PVR थिएटर्स.
then I am in touch with the GM of this software. So क्या what face I said, तुम लोग का एक ही नहीं है, they are doing Bollywood, they are doing Hollywood, they are doing regional movies. तो तुम लोग अपना मुंह उठा के don't act smart in front of them if you don't know anything. So that's how, when people talk rubbish with me, ऐसे वो वाला काम करके दिखाओ quality वाला, then come and argue with me, okay? Otherwise, just shut your mouths, just zip it up. So I got talking to him, and I told him that a professor is there. He wants to write a Marathi book. So can you get in touch with me with some Marathi publisher? And he said he will not entertain anybody else. I said okay, then you speak on my behalf and get it done, ना? क्योंकि ये नहीं बात कर रहा है, कोई और publisher होगा. Because I used to know people from the publishing industry, but now I'm not really in touch. Or maybe I knew some people, but I'm really not in touch because he has a publication, so it becomes easier for me to interact with him. So I face so much of opposition. Now I'm charging them. I'm saying it should come officially. I see money, I will charge for my services. I will not do anything free. When I did free for a lot of charitable organization, lot of charity, when I बोला back to back, I got a lot of क्रिटिसिज्म. तो छोटी बात है, यहाँ तो लोग जान के दुश्मन, खून के प्यासे बन गए थे. यू कम एंड डू दैट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क, अदरवाइज डोंट शो मी आइज, don't show me eyes. Even when people used to criticize me, I said come and stand and do that quality content. huh? I said do I care about Google ने shadow ban किया था. Did I sit down and said oh why I'm so afraid? I said I don't care a damn. यहाँ पे बैठ के लोगों को क्या लगता है, I'm just this, like I have nothing better to do. I said I don't have to prove my worth to anybody. So I used to have so many people fighting with me for nothing. एक तो इनका काम भी करो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी करो, फिर चैरिटी भी करो, फिर आंखें भी दिखा. आई रिमेंबर वर्किंग फॉर दिस voluntary as a volunteer for this NGO, and I was actually in literally I was stranded. उन्होंने मुझे ट्रांसपोर्ट भी नहीं दिया था और मैं चल के जा रही थी because I was stranded. The rickshaw is also not ready to go over there. तो ऐसे ऐसे काम भी किए. देन आई फॉट विद देम. आई सेड एक तो आप लोगों का काम करो, एक ट्रांसपोर्ट जंगल में है, ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिल रहा है मुझे. सो दे आर जस्ट गिविंग मी द ट्रांसपोर्ट. आई सेड दैट इज़ नॉट अ फेवर. वो लेडी सबको दे रही थी और मुझे क्यों नहीं दे रही थी? बिकॉज शी इज़ जेलस एंड फुल ऑफ हेट्रेड. क्या नॉनसेंस है ये. एनीवे मॉर्निंग में मुझे ये सारी बातें नहीं करनी है, बट इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग मी लाइक एनीथिंग. पोस्ट स्पा है. whenever I'm doing experiments with my hair, I do it because मेरे अंदर वो गट्स है कि भाई मैं कर लूँ और मुझे रिजल्ट्स भी मिलते हैं. ये मैंने अपने घर पे किया है, एंड आई गॉट मच बेटर रिजल्ट देन व्हाट आई गॉट इन द सलून. Okay, take care of yourselves. This is my latest lipstick. I'll just show the lipstick because this is absolutely gorgeous lipstick. This is the brand. So let me see, I'm working. You know what he told me? I was having a consultation with him. He said not website, app. तो मैं ऐप के पीछे ही पड़ी हूँ. तो ऐप आते आते मेरा ऐप हो जाएगा. आप हो जाएगा मेरा. I don't know whether it's going to work out, but it's okay. Chalo, let's take care of yourselves. Bye.